Let me give you some stuff. When God knows all things that we need of, why should we pray? जब परमेश्वर हमारी सभी अवस्थाओं को जानता है, क्यों हम उस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करें? Okay. You know that your husband needs some stuff. You do it. For example, if you know that you need to clean his garments, get it ironed. Okay. But for example, a close friend of him has invited him for a wedding that evening, and he didn't tell that to his wife. So normally she cleaned her garments, got them ironed, and now he has to wear a suit, okay? 2-piece or a 3-piece or a 4-piece suit, whatever it may be. But if he didn't tell the wife that she need to do it, and then, will she do it? Yes or no? No, because she only does the regular stuff. If he needs anything more or anything to be done, what is he supposed to do? Tell his wife before. Do this. I need this, please. Do this. And she'll get it done. और उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जब एक पति जिस प्रकार पत्नी की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे पहरावा को धोकर उसको इस्त्री करके रखता है, तो हम देखते हैं कई बार जब अगर एक विवाह के लिए उनको विशेष तौर पर बुलाया गया है, तो वो अगर बात पत्नी को नहीं बताया गया, तो वो उस प्रकार नहीं जानती, तो उस प्रकार की सूटों को तैयार करना है तो पहले से ही इस पति को अपने पत्नी को बताना है कि इस प्रकार का एक समारोह है, मुझे उसमें जाना है। Genesis chapter 1 verse 26. आइए उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 26वां पद। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea. Okay. And God said, let us make man in our image after our likeness. Okay. So when he's making, he's telling, let us, hum karenge. Let us make. For example, you made a nice, maybe chicken fry or roast, especially for your husband, maybe a few pieces, 2 or 3. And then you served him on the table and you started eating it. He says, man, what is this? Did you make it for me? Of course, he loves her. He allows her to eat. But still, when she has told that it is done for him, that belongs to him. And God said, let us make man in our image. That means me and Elohim and then the Holy Spirit. And we are going to create this through Jesus Christ. Okay? The Father and the Holy Spirit are now going to create everything. All things are to whom? Jesus. Okay? So he's the creator. Okay? So that he will have preeminence, he will be the creator. Okay? So that's the great plan. और हम यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार की योजना परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, तो उसका मतलब वहाँ पर पवित्र आत्मा एलोहिम और इस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा उस प्रकार बनाया जा रहा है। जब सभी कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए और उसी के हक पर बनाया गया, तो हम देखते हैं ये सभी उसमें होते हैं जिस प्रकार उसकी उस स्वरूप में बनाते हुए। Now, and God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. और हम वहां पर कहता है कि हमारे स्वरूप के अनुसार हम उसे बनाएंगे और उनके ऊपर वो आकाश और उसकी ओर वो समानता अधिकार दिया गया। While creating, he said, let us. And while giving them dominion, what did he say? Let them. That means he withdrew himself. और हम देखते हैं शुरुआत में हम देखते हैं किस प्रकार सृष्टि के समय हमको इस्तेमाल किया गया वो शब्द, और उसके बाद जो अधिकार दिया जाता है उनको, जिस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा उस अधिकार को प्राप्त करें। That means if the wife want to eat a piece, she can ask, hubby, my honey, can I have a piece? You're getting me now? Then he would love to give her back. You're getting me? In the same way, if something messes around in the dominion, the lion becomes wild. You need to now ask God, you need to go back and pray. My Lord, this is messing up. Give me some more power or solve it so that I can enjoy your dominion. If you don't pray, the lion will eat you up. And you see, it is normal creation and people suffer.
और हम देखते हैं जिस प्रकार जो अधिकार परमेश्वर दिया है, अगर उसको उस प्रकार खो दिया जाता है या फिर नष्ट हो जाता है या उलझन में पड़ जाती है, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से मांगने पाए ताकि उस प्रकार के अधिकार को वो उस प्रकार इस्तेमाल करे, नहीं तो वो उस सृष्टि से बाहर होता है और उस प्रकार के कार्य को वहां पर करते हुए हम देखते हैं। And God is not a man like us. They tell, I will give you tomorrow, and say, I gave the money to somebody else, I can't give it to you. Man, he has not double tongue, maybe triple billion kinds of tongues. Yeah, he changes mind. And they are not all are like that. Some are grown up from the kids and some are now as adults, okay? So if you are having a double tongue, you are a kid, you need to grow up. You need to grow up in the Lord. The Bible says that now here, God is a man of integrity. He once gives you, he will not touch you. For example, if he touches you and saves you, the devil will say, you're not a man of integrity. That's the reason why. He could have stopped Eve from eating the fruit, yes or no? Yes. He could have stopped Abel from killing Cain. Did he stop? No. No, he didn't stop. You're getting me now? Did you get the doubt? Why did he stop that? हम देखते हैं कई बार परमेश्वर उस प्रकार के कार्य पर अपने हाथ को उस प्रकार बढ़ाता नहीं जिस प्रकार हवा उस फल को खाने के समय उस प्रकार उसको रोकता नहीं, और जिस प्रकार कैन हाबेल को मारते समय उस प्रकार कैन को रोकता नहीं, मगर उसके ऊपर कार्यरत होते हुए उस कार्य को वो करता है। तो जिस अधिकार को दिया गया है वो उसी अधिकार में उस प्रकार बने रहने पाए। Eve was already told not to do it. It's up to Eve. Lord will not interfere. He's not going to interfere. He's not going to interfere in your family. He's not going to interfere in your finances. He's not going to interfere in your personal stuff. God has given you that stuff. That's the reason why. If you need anything from Him, what are you supposed to do? Pray. Many people suffer. Many Christians suffer only because of the reason that they don't pray. And you know what devil does to prayer? You just pray, 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 pray. So if you want God to interfere in your finances, whether they're broke, they're sick, you're dying, you need to give Him permission. Even to heal, or even to bless you, or even to take you to the top, whatever. You want to heal your marriage, bless your son, anything. You need, God needs, somebody say permission. So what is prayer? Prayer is nothing but permission. और हम देखते हैं जिस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में हो सकता है, आप रोग में होंगे, क्लेश में होंगे, आपके नौकरी, हर एक क्षेत्रों में अगर परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रकार कार्य करना है तो आपको उस अनुमति को देना है, और प्रार्थना के द्वारा उस अनुमति को हम परमेश्वर को देते हैं। Genesis chapter 1 verse 28 please. आइए उत्पत्ति 1 का 28। And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Underline the two words, subdue and dominion. So when He said, you subdue it, He will not interfere. He will not interfere. When He said, you have dominion, He will not interfere. Initially when He said, let us, but when now He's talking about them, He has given to you. The real estate owner has sold that house to you. He has given, maybe free, given. No, He's not going to say, don't sleep here. Don't do this in the kitchen. Don't use this toilet. No. He can't say it. Once He's given, that's it, it's yours. और हम देखते हैं जिस प्रकार परमेश्वर जब सृष्टि करता है तो हम के इस्तेमाल करता है, और बाद में उस प्रकार के अधिकार में उसे दे देता है ताकि बाकी सभी चीजें उसी की अधिकारी में होगी। जिस प्रकार एक रियल एस्टेट का व्यक्ति जब एक जमीन को बेचता है या फिर दान के तौर पर देता है, उसके बाद वो अपनी अनुमति उसमें कुछ कार्य पर नहीं करता है। When God said you to subdue, He will not interfere. He will not interfere. That's the reason why prayer is very important. और कई बार परमेश्वर हमारे जब हम उसको उस प्रकार अनुमति नहीं देते हैं तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि प्रार्थना के द्वारा हम उसको अपने जीवन में कार्यरत होने। Let's go to Psalms 115 verse 16. आइए भजन संहिता 115 का 16। The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath been given to the children of men. Read it again, sister. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Who created the heaven? God. Who created earth? God. That's period. No change. But whom did He give the earth and what did He keep for Himself? Hello. He kept the heaven for Himself and He handed over the earth to children of men. How many of you got this? That means anything. If you're having a black hole, the atmosphere is changing,
The sea is raising. It's getting too cold, too hot. God will not interfere. You messed it up. But now if you want to change it, you don't say, we'll do that, we'll meet it. You pray and He will change it. He needs your permission. You see that? Environmental problem, pollution. He can say, and clean up the pollution. You can say, Lord, clean it up every day. He can purify it every day. You see that? You're getting me now? So now, the earth belongs to whom? Whom? Heaven belongs to? Will He interfere in the earthly affairs? If He interferes, what will the devil say? You're not a matter of integrity. You said you're giving to the children of man. That's the reason why the devil is interfering and messing you up. Because the authority is given to you. जिस प्रकार आकाश परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों उसके द्वारा सृष्टि किया गया, मगर वो स्वर्ग को अपने पास रखकर पृथ्वी को मनुष्य जाति को दे दिया। जिस प्रकार इसी के लिए हम देखते हैं सभी के ऊपर उसी का ही अधिकार होता है, मगर वो अधिकार लोगों को दिया गया। तो चाहे कोई भी रोग हो, चाहे क्लेश हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे मौसम बदल रहा हो, या फिर इस प्रकार के कई ऐसे बातें, मगर जब तक हम उसको अनुमति नहीं देते हैं उस पर वो कार्यरत नहीं होता है, जो कि हम उसके लिए ठहरे भी हैं। What did Jesus say? Let's go to Matthew chapter 6 verse 10. आइए यीशु क्या कहता करके मत्ती उसके 6वां अध्याय उसके 10वें आयत पर जाएं। The kingdom come, thy will be done in Thy kingdom come. What is this? Jesus taught the disciples how to pray. Thy will be done in earth as it is in heaven. But there is a lot, there is everything in this one word. I think this is a solution for the entire mankind, this one word. हम देखते हैं यहाँ पर यीशु अपने चेलों को उस प्रार्थना को सिखाता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। उसका मतलब सभी कुछ उसी के द्वारा दिया गया और उसी पर वो कार्यरत करता है जिसके लिए वो ठहरा भी है। That means God's will has been restricted only to heaven, not to earth. हम देखते हैं जिस प्रकार का परमेश्वर का कार्य उस प्रकार उस स्वर्ग में सीमित है, ना उस पृथ्वी पर। That means unless you say this, God is not going to interfere in your personal affairs, family affairs and earthly affairs. और व्यक्तिगत जो बातों में, अपने पारिवारिक बातों में और बाकी सभी बातों में जब तक हम अनुमति नहीं देते, परमेश्वर उसकी ओर अपने हाथ को नहीं बढ़ाता। And you murmur, God is here, why will all this stuff happen to me? If God is here, if God is there, if God is there, why this should all happen? And God says, my people are destroyed due to lack of. So you need to ask for wisdom. You need to know that I am a God. First I created it and then learn from me and then live a happy life. And use me by the term called prayer. और हम देखते हैं कई बार हम उस प्रकार परमेश्वर से हम मांगते रहते हैं कि तेरे होते हुए इस प्रकार की बातें हमारे साथ क्यों घट रहा है, वहां क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है। तो कई बार हम उस प्रकार परमेश्वर को अनुमति नहीं देते जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण इस प्रकार की बाधाओं में मनुष्य पड़ते हैं। तो हम अनुमति देने पाए, हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर अपने कार्य को करेगा अगर उस प्रकार हम होते हैं तो। If somebody is dying in an accident, a bus is coming and ramming into into another bus. Can God stop? Can His angels are there sitting watching? देखो अभी बस कैसे राम, अरे 50 लोग मर गया. God is watching. People will say, if God is there, why should this happen? And if God says, if you cry to me, if you pray, you know what I'll do? Forget about bus ramming another bus. I will send even angel so that your foot will not hit a small stone. और हम देखते हैं जिस प्रकार अगर दुर्घटना में एक बस के साथ टकराता अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कई बार हम पूछते हैं परमेश्वर होते हुए इस प्रकार की घटना क्यों हुई। अगर हम उसको अनुमति देते हैं जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है एक छोटे से पत्थर को चोट खाने से वो उसको संभाले रखेगा। Man, somebody will start to pray from today. Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसका 3रा पद। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. You see that? When Christ, even though Christ died on the cross, even though He died on the cross, and He gave all authority to mankind, it's all in heavenly places. So in order to execute that authority on this earth, you need to pray. हम देखते हैं जिस प्रकार यीशु उस क्रूस पर मरता है, अधिकार हमें दिया गया, मगर यहाँ पर जिस प्रकार कहता है स्वर्गीय स्थानों में सभी कुछ दिया गया, अगर उसको पृथ्वी पर योग्यता में उस प्रकार ले आना है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। Even Jesus, if God wants to take out this planet and bless the planet, He cannot come. If He stops that bus, devil will say, hey, God, give me your throne. You have violated your word. You are no more a man of integrity. You protected that guy from dying. You protected that guy from being sick. You protected this horrible stuff. No, you can't be God. You said you gave to the children of men. That's the reason why I'm using my authority. Can the devil exercise and make anybody sick in heaven?
Can the devil make two angels clash each other and broke his wings? Huh? Can the devil mess up somebody's thoughts and they can quarrel and kill each other there in heaven? No, it cannot exercise its authority because heaven is the Lord's. Okay? He has given the earth to children of man. That's where the devil came. I'll mess it up. The reason why is because it's given to the children of man. And God cannot interfere. If God interferes, He won't be God. So if you want God to be God, you need to interfere. और जिस प्रकार उस दुर्घटना के द्वारा अगर उस व्यक्ति को बचाता है परमेश्वर, तो जिस प्रकार शैतान उस पर दोष लगा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें तूने कहा था उस पर नहीं ठहरा है। नो, ये सभी बातें इस प्रकार पृथ्वी में होने के लिए अगर हम परमेश्वर को अधिकार देते हैं तो उस प्रकार कार्य करेगा। हम देखते हैं स्वर्ग में ऐसे कोई बात नहीं होता जिस प्रकार दो स्वर्गदूत लड़ते हैं या कोई उलझन में पड़ता है, क्योंकि वो स्वर्ग की बात है और उसे वहां पर ठहराया गया है। मगर पृथ्वी के सभी अधिकार हमें दी गई है, अगर हम अनुमति देते हैं उस प्रार्थना के द्वारा, तभी वो हमारे जीवन में And now, even God wants to do something in this earth and restore everything what has been fallen. So what did God do? He has to come as a man. That's why Jesus was called Son of Man. Otherwise, it's illegal for him to do anything on this planet. और हम देखते हैं जब इस प्रकार के कार्य को इस पृथ्वी में होना है तो मनुष्य के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र इस मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आता है और हमारे लिए उस कार्य को करता है और उसी के द्वारा हम उसको प्राप्त भी करते हैं। Otherwise, the devil would say, "Hey, God, you cannot come." No, that's the reason why being a man is a blessing. If you are an angel here or a spirit, you can do nothing. Blessed are you for your man. You can bring heaven down. हम देखते हैं जिस प्रकार उस प्रकार वो शिकायत शैतान कर सकता था, मगर इसीलिए वो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और उस प्रकार की करुणा को हमारे जीवन में दिखाता है और हमारे साथ रहकर उस बात को करता है, क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। And the devil puts these thoughts in your mind. There's no God, nothing, and you feel insecure, you feel all these things, and you want to die and commit suicide. People die, people quarrel, people fight each other. All this mess is happening because they lack the knowledge. The devil, do you know what the devil steals? The devil is a knowledge stealer. और हम देखते हैं शैतान उस प्रकार की बातें हमारी उस चिंताओं को डालता है कि ये इस प्रकार हुआ या उलझन में इस प्रकार हो चुका है, मगर जब तक हम उसको उस प्रकार अनुमति नहीं देते तो वो नहीं करता। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत कई बार शैतान इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में डालता है जो इस संसारिक ज्ञान से भरा हुआ है। You getting me now? How many of you are getting the stuff? Man, I'm telling, this stuff can change your career. होने पाए कि ये वचन जरूर आपके जीवन को परिवर्तित करने पाए। You know, so what is the prime thing for a person to know is to know the mystery of prayer. You know that what is prayer? Prayer is a very great mystery. हम जानने पाए कि जिस प्रकार की उस भेद को हम समझने पाए जो प्रार्थना के द्वारा है, और प्रार्थना एक भेद है जिसको हम उसी के पास ले जाते हैं। Today I am unveiling the mystery so that the devil will go crazy today. और इस प्रकार के भेद को हम समझने पाए ताकि शैतान उस प्रकार पागलपन की अवस्था में हो। You see that now all this authority has been given to Christ as a man, as a man. So now in Christ and in his name you can use your authority. और एक अधिकार के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर हम देखते हैं मसीह को सभी अधिकार दिया गया, तो वो हमारे जीवन में उस प्रकार कार्यरत होने के लिए हम मसीह के उस अधिकार को हम उस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। You know, this is a mystery. God's will is a mystery. Prayer is a mystery. Everything about the kingdom is a mystery. परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर एक भेद के समान है, प्रार्थना करना एक भेद के समान है, परमेश्वर के राज्य के हर एक बात एक भेद के समान है। I think many people are repenting now. Had I prayed this, had I asked God, had I did this, man, you would have avoided. No problem. God can even restore what you didn't pray and what you lost. Hallelujah. You see that? Never late in the kingdom of God. आपको परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। जो कुछ आप खो चुके हैं, जो कुछ आप उलझन के समय उस प्रकार नहीं प्राप्त किए, उस प्रार्थना के द्वारा उसको पुनर्स्थापित करेगा। That's the beauty of coming to Jesus. You know, if you come, he says, I will restore the years that you have lost. What the cankerworm, what that person cheated and eated your money. Other people will put bitterness in their heart. Yeah, he cheated me. He didn't took it away. He took it that. He did it. You all have this bitterness and you feel, ill about that person. But a kingdom person, he will say, Lord, all these years, that money, with 100% interest, tenfold money, restoration in Jesus' name. और हम देखते हैं कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे पैसे को उस प्रकार नाश कर दिया, इस प्रकार की अवस्था में मैं आगे बढ़ रहा हूं। मगर परमेश्वर के राज्य का एक व्यक्ति उस प्रकार कहेगा, जो कुछ मुझे खोया गया यीशु मसीह के नाम में वो मैं पुनर्स्थापित करूंगा और वो मुझे मिलेगा।
You know what the guy does? When you pray for restoration, yeah, and the other guy thinks that, man, I stole a lot of money from this guy, but this guy is not broke. He even got blessed. What's the secret? And I lost the money. Steal and it shall be stolen. Good measure. Press it down. Shaken together, it will be stolen. Give and it shall be given. Good measure. Somebody is getting a revelation here. So that guy, he became poor, and he's losing everything. And this guy, even though people are robbing, this guy is generous, trusting in God. Because this earthly stuff cannot change the will of God. You need to prosper and be blessed. और हम देखते हैं जिस प्रकार परमेश्वर जो व्यक्ति उसको चुराता है और उस प्रकार उसे वो कंगालपन की अवस्था में लगातार आगे बढ़ता है, मगर दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार वो देते रहता है उसे खोता है, फिर भी परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर होती है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा कभी भी उसके सामने उस प्रकार नाशमान नहीं होगी। If you don't know what's happening when you pray, you lose interest in prayer. But when you know what's happening in prayer, man, when you kneel down and pray, you know, the Most High, the Bible says that angels will take your prayer and add fragrance to it, and then it will put it before God. And God, even when you cry, God himself intervenes. And you know what he takes? He takes the drops and put it in the bottle and say, I will surely fulfill it. और हम देखते हैं जिस प्रकार उस प्रार्थना के महत्व को अगर हम समझते हैं तो जरूर परमेश्वर उसके लिए कार्य करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत उसमें इत्रों को डालकर इस प्रकार सुगंध द्रव्य के समान यीशु मसीह के सम्मुख में लेता है, हम देखते हैं परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देता है, यहाँ तक कि आंसू को भी वो उस कुप्पी पे रखता है और उसके लिए उसका अर्थ या उसका सम्मान परमेश्वर करता है। Hallelujah. You're getting something? You're getting something. If you don't pray, you're not at all a man of influence. You're not changing anything. But once you know what will happen when you pray, man, you will enjoy. You will jump to joy before you pray. You will just dance for 1 hour and pray for 2 minutes. Hallelujah. Before you pray, because prayer is so powerful. और प्रार्थना जब आप नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि उन सभी बातें उस प्रकार नहीं घटती और सब कुछ उल्टा चलता है, मगर जब आप उसके महत्वता को समझते हैं तो जरूर उस प्रकार प्रार्थना में होने के लिए आप मगन होंगे, आप नाचेंगे, 1 घंटे नाचकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना के ऊपर आपको उत्तर देगा। And then after 2 minutes you start praying for another 2 hours because you know the power of prayer. You see that? You will enjoy praying because you know that you know that God is seriously gathering your prayers. You know, the prayers will be added with, what is that incense and flower? From the cross. He will not see your sins. He will say, Father, these prayers are not them. It's like me praying, so accept it. Because you're praying it in Jesus' name. क्योंकि आप उस महत्व को जब हम समझते हैं तो जरूर जिस प्रकार कहा गया कि प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत उस पर इत्र डालेंगे और उस प्रकार उसका सुगंध द्रव्य बढ़ेगा, वो उस प्रकार होता है जो क्रूस पर जो उस प्रकार हमारे लिए मारा गया उसके द्वारा उसको हम पहुंचते हैं। जब वो प्रार्थना करता है तो मसीह परमेश्वर से कहेगा कि वो नहीं मगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसके ऊपर उस उत्तर को हम प्राप्त करते हैं और वो केवल उस मसीह के द्वारा। You see that? That's the reason why Bible says men ought to pray. You don't know the scripture? Man ought to pray always. Why? When Bible says man, it's not just the gentleman. Man is mankind. So that keep allowing me to do the will of God, what's in heaven as in earth. As you're praying, the will continue. If you stop, I will cease. और परमेश्वर का वचन कहता है लगातार प्रार्थना में बने रहो, न इस प्रकार क्योंकि मनुष्य जाति होने के नाते जो स्वर्ग की बातें पृथ्वी में होना है तो जरूर हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं और परमेश्वर उसको इस पृथ्वी के ऊपर कार्यरत करेगा। Let's go to Matthew. आइए मत्ती रचित समाचार में जाएं। 21 verse 21 and 22. Chapter 21 and verse 21 and 22. 21वां अध्याय उसका 21 और 22। Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing you shall receive. Okay, let's read this. Verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this thing which is done to this fig tree, but you shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea. It shall be done.
Now, let's come here again. Chapter 17 and verse 20. उसका 17वां Matthew, अध्याय chapter 17, verse 20. मत्ती उसका 17वां अध्याय उसका 20वां पद। And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of a mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Okay. Now, he's talking about a mountain. और वहां पर वो पहाड़ के बारे में कहता है। And he's talking about faith, which seems to be very simple. A simple word. God, do this. Simple word. That's why it's like a mustard seed. और हम देखते हैं एक आसान तौर पर उस शब्द को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इस पहाड़ को तो हटा दे, इसीलिए उस शब्द को इस्तेमाल किया एक राई के दाने के समान। Let me talk about a mountain. A mountain is something that cannot change. It's impossible to change as long as the natural man exists on this planet. और हम देखते हैं कि उस प्रकार अस्थिर होना या फिर वहां से हटना पहाड़ को बहुत ही मुश्किल है जब तक इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य इस प्रकार वास करता है। AIDS could be a mountain. Cancer could be a mountain. Or poverty. People from generations, they live in poverty. Some people live in a limited salary all their life. These are mountains where the world will see these are natural disasters. This is nature. This is the course of nature. We can't stop it. This is what the Bible calls as a mountain for man. Somebody say mountain for man. और जिस प्रकार बाइबल कहती है उस पहाड़ के बारे में हो सकता है एड्स या कैंसर या कई ऐसे रोग, या फिर हम देखते हैं जो कंगालपन की अवस्था, या फिर सीमित जो धन हम प्राप्त करते हैं कार्यों के द्वारा, ये सभी हमारे लिए एक पहाड़ के समान हमारे मसीही जीवन में हो सकता है। Now, what is God talking about? These impossible things. That means it is impossible that man, neither doctor, nor a great politician, or a great scientist, nobody can change it. और चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, विज्ञान का अधिकारी हो, या फिर इस प्रकार कोई अधिकारी हो, या फिर राष्ट्रीय नेता हो, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार इन बातों को बदल नहीं सकता। But God says, this kind, impossible. Somebody say highly impossible. Somebody say this kind. Let's go read verse 21. आइए किस पद को हम पढ़ें। Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Now God is telling you, are praying and doing the small things, chote. Healing things, healing fever, healing that, getting a bit rich, building a house, getting a government job, getting married, all this stuff. God says, okay, that's okay, prayer. But if you want to do something, change the course of nature. Let the nature know me through you, you know, you need to add fasting to your prayer. This kind will disappear. If he's dead, raise him up. Fasting says that. If you are poor, become a billionaire. Fasting says that. हम देखते हैं जिस प्रकार छोटी छोटी बातें आपके जीवन के द्वारा कई बार होता होगा, एक छोटे से घर बनाते होंगे, छोटी सी नौकरी, या इस प्रकार कई ऐसे बातों को आप करते हैं, मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इस सभी जाति की बातें प्रार्थना और उपवास के द्वारा जो आपके जीवन में एक बदलाव के तौर पर ले आता है, और वो केवल उसी के द्वारा होता है जो उपवास और प्रार्थना। So sometimes you need to pray to God so that you can even fast and pray. और कभी ऐसा होता है परमेश्वर से प्रार्थना करना कि आप उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। You can pray for a month so that you can pray at least, you can fast at least for a day. You need to pray 1 month. Morning and evening, Lord, let me at least fast and pray. Because when you fast and pray, the course of nature will be shifted. और हम देखते हैं 1 महीने तक आप प्रार्थना करते रहें ताकि एक दिन के उपवास के लिए, क्योंकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपके सभी परिस्थिति को वो बदल डालता है। The impossible will be possible. और आपका असंभव संभव में बदल जाता है। Somebody said this kind. Normally this kind troubles and kills people. But God says this kind can be uprooted and eliminated. हम देखते हैं ये समय इस प्रकार की बातें हो रही है और यीशु कहता है ये जड़ के साथ उखड़ेगा इसी वक्त। You see that the church being so great, so powerful is now being destroyed due to lack of knowledge. कलीसिया इस प्रकार के सामर्थ और उस प्रकार की बातों पर अधिकारी है मगर उसको खो चुका है क्योंकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान ना होने के कारण। That means if you are planning to fast, you need to have some data in your mind, maybe to empty a graveyard. Hallelujah. Or to buy 20 houses. How many houses? If you are fasting, fast for something uncommon. So what will all your neighbors do? They will dump some of their stuff in the junk and follow your God.
और हम देखेंगे जिस प्रकार उपवास और प्रार्थना के द्वारा उन बातों को हम करने पाए जो आपके लिए बहुत ही असंभव है, चाहे उस प्रकार की अवस्था में जो उस कब्र की अवस्था में है, या फिर एक 20 घर को बनाना, इस प्रकार की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं केवल उस उपवास और प्रार्थना के द्वारा। If you are fasting, you can fast to eliminate hospitals in that city. If you are fasting, you need to fast that this whole city should be a city of millionaires. No poor man. Somebody will not waste their time from today. You don't think that you are praying and nothing is happening. That's the reason why the devil wants you to skip prayer. I need to go to a marriage. I'm busy today. I need to go a job. Hey, you're going to earn peanuts, huh? And you don't want to bring King Heaven. You know, in the heaven there are roads of gold. God can, He can just kick a small stone, damn, and it can fall in your balcony. And you can become a millionaire, man. So what you need to pray? You need to pray to fast. If you are sick in your body, you can fast. You need to ask God to heal you immediately so that you can fast and change the course of nature. और ये समय से इस प्रकार परमेश्वर कार्य करने पाए, चाहे आपको एक रोग होगा तो वो आप उपवास लेकर उस प्रकार प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर से मांगे इसी वक्त मुझे चंगाई दे ताकि मैं उसके बाद उपवास लेने पाऊं और परमेश्वर उस पर कार्य करे। That's why Jesus healed everybody before he taught, because he can't tell them to fast and pray. They're sick. So heal everybody and say, now to move this, fast and pray. उस प्रकार की बातों को हम देखते हैं जब यीशु मसीह कहता है कि अब आप इस प्रकार उपवास और प्रार्थना करें, वो जरूर उसमें परिवर्तन होगा। See, your husband will become a pastor from a drunkard. Hallelujah. परमेश्वर आपके पति को जिस प्रकार उस शराब की अवस्था से एक पासबान के तौर पर बदलेगा। You know that now. He will not even drink coffee and tea. He will only drink milk and lassi, even without sugar. Hallelujah. That's what fasting can do. और हम देखते हैं कि वो बिना शक्कर और बिना इस प्रकार चाय को नहीं पिएगा, मगर हम देखते हैं दूध को पिएगा। वो परिवर्तन कर सकता है उपवास के द्वारा। Don't keep cursing him. You drunkard, तू मरेगा. Don't keep cursing him. He will not change. Don't curse. Fast and change the course of nature. He needs help. And God's will is God's want him to change, and you are not praying. You're cursing. Stop cursing and fast a bit. और इस प्रकार आप लगातार कहते रहें कि आप मरोगे, आप कभी बदलोगे नहीं, मगर उनके लिए आप उपवास और प्रार्थना करें। उनको सहायता की जरूरत है। उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन पूर्ण तौर पर बदल जाएगा। Don't say, why God gave me this poverty? Pray and put an end to the poverty. If it is not working, fasting prayer. Somebody say fasting prayer. When you pray, what happens? Sometimes God may not answer the prayers, but He will anoint you with a promise. What He will anoint you? Every time you receive a word, you are receiving an anointing. It's not the oil, it's the promise that empowers you to fulfill it. That's the anointing. And God is giving this word. Now you are anointed to pray. और इस प्रकार परमेश्वर हमें उसकी ओर ले जाएगा जिसके लिए हम ठहरे गए हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन परमेश्वर हमें उस प्रतिज्ञा को देता है, और वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए उसका वो अभिषेक को हम प्राप्त करते हैं, और वो पूर्णता होती है उस प्रार्थना के द्वारा। Every time you're receiving the word, you are receiving the anointing, empowerment to do that. Why? When you receive the word, it is God's will to execute that through you. जब कभी आप वचन को प्राप्त करते हैं, वो अभिषेक को प्राप्त करते हैं ताकि वो प्रतिज्ञा पूरा होने पाए और वो आपके द्वारा पूरा होता है। The word, Jesus, the word became flesh. Now when you read the word, God anoints you with the word. Now the word of God is now becoming your flesh, and you are becoming the word of God. और जो वचन जो देह के तमान थी, जो यीशु मसीह, वो आपके जीवन में कार्य करता है और वो आपके देह को उस प्रकार कार्यरत होता है उसको पूरा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And if your wife is messing up, quarreling always, cursing you, not honoring you. The problem with wife and husband is husband wants respect and wife needs love. And the wife always doubts that maybe the husband is sharing his love with somebody else. That's why she disrespects him, and he doesn't get respect, and so he beats her up, ignores her a bit. You see that? You respect him, he will give his full love to you. You're getting me? हम देखते हैं कि अगर शैतान कई बार इस प्रकार की शंका हमारे मन में डालता है कि उस प्रकार की बातें कि जो हम शंका के द्वारा उस प्रकार कार्य करते हैं, मगर हम उसे प्रेम के द्वारा उस पत्नी को स्वीकार करते हैं तो जरूर, या पति को जरूर, उसके जीवन में एक बदलाव होता है। Somebody say marriage. All right. This is what God showed me. Go back to the foundations
and come on, bless the foundations. That's what God told me all this November. और परमेश्वर ने पूरे नवंबर में इस प्रकार मुझसे कहा कि आप उस नींव की ओर जाएं, उसको आप आशीषों से भरें ताकि सब कुछ सही होने He पाए। told me, lay the foundation of prayer. Lord, what should I teach? I've been teaching prayer. Then he started giving me new revelation about prayer. You're getting me now? Then he said, talk about marriage. Start giving me new revelation about marriage. और जिस प्रकार विवाह के बारे में मुझे प्रार्थना के बारे में बताया गया, तो इस प्रकार कहा कि उसकी नींव को उसको एक नई परिवर्तन के तौर पर आपके जीवन में हो और विवाह भी उसी प्रकार एक नई दिशा की ओर होने पाए। All right. Marriage is a great plan of God. विवाह परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है And the devil took off even marriage from the body of Christ, और हम देखते हैं मसीह की देह में इस प्रकार उस प्रकार की बातें घटती है where even the priests don't marry, और यहाँ तक कि याजक विवाह नहीं करता and where they're supposed to marry and set an example. और यहाँ तक कि वो इस प्रकार विवाह करके एक उदाहरण होना था। And now, the reason why God put marriage together, because it is not good for man to be alone. और जिस प्रकार परमेश्वर ने वो स्थापित किया विवाह को कि जिस प्रकार वो मनुष्य का रहना अकेला स्वाभाविक नहीं है। You know, the Bible talks in Deuteronomy, I don't want to give the scripture, it says, one can chase 1,000. और परमेश्वर का वचन कई बातों को कई तरह से कहता है और हम देखते हैं एक चीज हजारों को बदल सकती है। Can somebody complete this? Two can chase. Huh? How many of you know this? So marriage is going to increase the potential of man in his finances, everything, 10 times. और हम देखते हैं विवाह जिस प्रकार 10% उस प्रकार परिवर्तित करता है उन सभी बातों को जो परमेश्वर के वचन के आधार पर। If you are attacking your own marriage, if you are attacking your wife, you are degrading your potential 10 times. अगर आप अपने विवाह को अपने पत्नी को इस प्रकार नीचे करते हो तो जरूर उस सामर्थ्य को जो क्षमता आपको दी गई है उसको आप नीचे कर रही हो। Stay, somebody says, stay together. Stay together. So that you will remain all your life 10 times powerful. That's what people will say. How come you're 10 times powerful? Because my Bible told me to honor the marriage. सदा एक साथ बने रहे तो जरूर आपका जीवन भर एक ही साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन मुझे सिखाया कि विवाह का आप आदर सम्मान करें। Adultery and fornication will put you down how many times? Yeah. You're getting me a revelation now? And you keep praying, God bless me, bless me, bless me. You see that? You change when you get a revelation. You change when you get understanding. You change when you change things. Now, yeah. और हम देखते हैं कि जो परिवर्तन हमारे जीवन में होता है, जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, वो उसी के द्वारा होता है और उसको हम प्राप्त करते हैं। एक कैलेंडर बदलते समय हम बदलते नहीं, मगर जब कभी प्रकाशन हमारे जीवन में कार्य करता है हम लगातार बदलते हैं। One more key on marriage and I'm going to close. एक और कुंजी को मैं आपके बीच में रखकर उसे समाप्त करना चाहता हूं। Now, let me talk about prayer and then connect it to marriage. Okay? Somebody say prayer and marriage. How can you connect it, Pastor? Let me tell you. और प्रार्थना और विवाह जिस प्रकार जुड़ा हुआ है, हाँ ये हम देखने पाए। Now, God told Peter, Peter, I found something in you which is precious. You always inquire. You always pray and know, receive from heaven. That's the gift that you have. Because when God asked Peter, he asked all the 12. When you know something, God differentiates you. Knowledge differentiates you. You see that? Intimacy differentiates you and exalts you. When Peter, God said, who am I? Some said Elijah, some said Elisha, and some said that John the Baptist, he rose again, this and that. And Peter said, God said, Peter, what do you think who I am? He said, you are Christ, the Son of the living God. He says, flesh and blood did not reveal this to you. I did not reveal. You got connected from heaven. So what I give you the keys of kingdom. What you do, what you bind will be bound, what you open will be open to bring heaven down. You see that? Now God has given him a special authority. If you're connected, God will teach you more. And now, okay, that's good. That's what I have taught you before. And now God says, if you want to exercise the authority at a complete level, if you're earning 50,000, how many of you want to earn 5 lakhs? Everybody wants that. You keep praying for that. Instead of praying and struggling, what you do is, you go to your wife, hold her hand. Because Bible says, if you pray, I will answer. But if two agree, it shall be done. So marriage is more powerful.
You're getting me now? Marriage makes your prayer powerful. हम देखते हैं विवाह आपकी प्रार्थना को लगातार मजबूत करेगी। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है जहां दो व्यक्ति सहमत होते हैं वहां पर उस विषय के ऊपर परमेश्वर कार्य करता है। तो आप और पत्नी के साथ जिस प्रकार आप सहमत होते हैं उस प्रार्थना के विषय में परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। So you got a single key. If you're married, you got 10 keys. Yeah. You're getting me now? You're getting me now? Somebody is honoring marriage and going to the next level. You're making your prayers powerful. Hallelujah. Now, the Bible says, Bible says, I will give you one more key. Let me go to Peter. Okay. 3:7. Somebody say prayer and marriage. 3:7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. You see that now? You see that? So what is hindering you? So you are praying, because now you are agreeing and praying, things are moving. Heaven is moving. And now you disagree. What is being hindered? Somebody is operating at the full potential from today. Always when you're going to marry somebody, look whether she can pray or he can pray with you. Hallelujah. Otherwise you abuse the purpose. Put your hands on your head. Okay, those who are married, put two hands on your head. Okay. Father, I bless today my church. It's you who taught me this. Lord, let your grace and mercy prevail on me and prevail on every church member today. What you have taught, let it be up deep-rooted in our spirit. And let us make a great difference. Let us prepare in the month of December, Lord. I pray. I bless the church now. I cancel every negative words that I have spoken on their families. I uproot every negative thoughts. I wipe out the past by the blood today. Lord, I release a new creation blood by the cross of Jesus. Lord, I begin a fresh marriage, fresh love, a fresh peace into their lives. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, from today, I prophesy and uproot ignorance for prayer. And now I heal their bowels. I heal their bodies so that they can even fast and pray, Lord. Because they want to fast and pray, I command every weakness to come out of their body. Every weakness that is stopping them to fast and pray, I uproot it in the name of Jesus so that they can fast and pray and change the course of their family history. Change the curse into a blessing. Lord, change the poverty into prosperity. Change the sickness into healthy body. Change the short life into a long life, my Lord. Let them fast and pray. I bless their stomach. I bless their families. I bless their body as they lay their hands. So that even though they fast, they will receive strength to pray and change the course of their family's nature. From a middle class family, a troubled family, to a more powerful, dominion, authoritative, glorious family. In Jesus' mighty name, I pray and I bless them today. I seal them with the blood of Jesus, my Lord. So that they will pray. The spirit of prayer come on them. And I release peace and love in their marriages. Devil, take your hands off. And today I release these three keys of their life. The spirit of prayer, the spirit of fasting and prayer, and peace in the marriage. In Jesus' name I pray. Somebody clap to the Holy Spirit. Man, the God. And somebody clap to the cross of Jesus, which is the best of everything. Thank you very much. God bless you.